أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to the last lecture of the course Data Analysis for Practitioners. इस इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो भी एनालिसिस है, चाहे वो क्रॉस टैबुलेशन की फॉर्म में है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में है, चाहे वो क्वालिटेटिव फॉर्म में है, उससे लेके रिग्रेशन एनालिसिस तक हम जो अपना एनालिसिस है वो रिपोर्ट कैसे करते हैं and how we make it presentable. Before going into the details of this lecture, these are the four contents which should be covered. As usual, background and review of the course. Second will be reporting the survey analysis. Third will be regression analysis. And fourth, the conclusion of this course, which will be have the brief overview कि हमने अब तक मतलब इन 9 lectures में हमने cover क्या किया and what actually was the core objective of this course और इसमें और क्या क्या improvement further हो सकती हैं. That will be part of your feedback. Now going forward, जब इस कोर्स में हम जो चीजें डिस्कस कर रहे थे उसमें थी पहले कि प्राइमरी रिसर्च होती क्या है and what actually are the basic ingredients of the primary research कि हम अपना टॉपिक कैसे डिफाइन करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिफाइन करते हैं, हम अपनी मेथोडोलॉजी कैसे डिफाइन करते हैं, हम अपना क्वेश्चनर कैसे डिजाइन करते हैं, हम डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, हम रिस्पोंडेंट को कैसे चूज कर रहे हैं, हम रिस्पोंडेंट के टाइम कैसे बाय इन कर रहे हैं. ये सारा प्रोसेस हम इनिशियल के कुछ 2-3 लेक्चर्स में हम डिस्कस करते रहे. उसके बाद जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने सर्वे कर लिया, what actually is the data entry mechanism into the system कि यानी कि SPSS और स्टैटा की हमने बेसिकली बात की थी इस पूरे कोर्स में कि हम उसमें डेटा कैसे एंटर करते हैं. अब डेटा एंटर कर दिया, based on the needs and based on the information provided, how we are going to clean that data and then how we are going to do the analysis. ये सारी चीजें अब तक हम डिस्कस करते आए हैं इस कोर्स में. एंड इस पूरे प्रोसेस में जो 3 से 4 जो बेसिक की मैसेजेस थे वो ये थे कि यू शुड बी simple and smart enough to do a primary research to collect responses from respondent, and you should know the each and every approach of the research. यानी कि जो ट्रायंगुलेशन मेथड है कि हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्सेज को कैसे मिक्स करना है, हमने how we should be connecting the dots during the analysis and how we should be connecting dots during the interview conduction. हम इवन जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसमें taking questionnaire with ourselves, उसको किस तरीके से देखा जाता है, we also try to discuss that thing throughout the discussion. अब हमने एनालिसिस कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया. नाउ हाउ we report how we report the survey analysis. अब ये एक स्टडी की मेथोडोलॉजी है कि हमने ये जो है इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है सेकेंडरी सोर्सेज से, जिसमें हमारे पास आ जाता है डेस्क रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू. एक ये थी स्टडी इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स इन खैबर पख्तूनख्वा. अब उसमें हमने डेस्क और लिटरेचर रिव्यू तो कर लिया regarding the dispute resolution councils from a global perspective to the local perspective. Next was the number of cases being reviewed, यानी कि जो 8 या 9 जो DRCs जिनकी evaluation की गई, उनकी effectiveness के parameters जो भी थे, उनके जो cases थे उन cases का review किया गया. The third and the basic or the core part of this whole methodology was the primary research के अब हमने पूछना है beneficiary से who is taking the benefit from this council, जो अपना केस लेके आ रहा है and that case is getting resolved from there, and from the council members
how they are helping the community or how they are helping the people in resolving the cases, ताकि जो है जो जुडिशरी का जो बर्डन है how they are contributing to that. तो ये सारा कुछ हमने प्राइमरी प्राइमरी रिसर्च या प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमने ये चीजें कलेक्ट की. अब ये चीजें तो कलेक्ट हो गई. Now, how we are going to report? This is one way of reporting कि एक comparative analysis हमने कर दिया districts का कि total number of cases कितने थे, total number of cases resolved कितने थे, how many were referred to courts, यानी कि अब is cases taken up, cases resolved, referred to courts, कितने कितने satisfied थे, कितने not satisfied गए हैं. Now, these are the key parameters हमने इस पूरे एनालिसिस में जज किए. पहला पैरामीटर ये था कि जब अब नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ते गए ओवर द पीरियड. फॉर एग्जांपल कि एक साल में 2016 में थे 115 केसेस थे बनू में, 2017 में वो 441 हो गए. Now, this is what increase shows कि लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ता गया. सेकेंडली, जब ट्रस्ट लेवल बढ़ता गया तो वहां पे रेजोल्यूशन का जो है पीरियड भी या रेजोल्यूशन का नंबर भी ज्यादा हो गया. ये क्यों हुआ? Why there was need of this DRC? This should be another question जिसको यहाँ पे आंसर किया जा सकता है. Because the need for the DRC and need for that council or need for even something related to effectiveness we are working on, तो उससे हमें उस नीड से भी हमें उस चीज की या उस प्रोग्राम की या उस जो भी डेवलपमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस का पता चल जाता है. इन डीआरसीज ने इस पर्टिकुलर केस में किया क्या? इन्होंने किया ये कि जो जुडिशरी के ऊपर जो बहुत ज्यादा संजीदा नौयत के जितने केसेस थे, लेट्स से आई कंपेयर a case related to some serious offense or to life or to death, यानी उन केसेस को छोड़ के जो आम सिविल केसेस जिसमें प्रॉपर्टी, मैरिटल अफेयर्स एंड सॉर्ट ऑफ सिविल नॉन ऐसे ऑफेंसेस के जिनका फैसला आउट ऑफ द कोर्ट भी हो सकता था, तो उसके इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे बर्डन को जो है इन काउंसिल्स ने कम किया. नाउ नेक्स्ट पार्ट, what's the legal aspect of these DRCs? इस लीगल एस्पेक्ट को या इस लीगल कवरेज के लिए जो है फिर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा केम अप विद लॉ और वी कैन से पर्टिकुलरली द डीआरसी एक्ट, जिसको उन्होंने असेंबली से पास करवाया. सारा कुछ लीगल हो गया, सारा प्रोसेस लीगल हो गया. नाउ दे आर बिकमिंग इफेक्टिव. इन नंबर्स के पीछे ये तो एक इन नंबर्स का बैकग्राउंड हो गया. Another story of these numbers कि over the period जो है ये ग्राफ अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ जाता रहा. वो इस वजह से भी जाता रहा कि the conventional jirga system or the conventional system which was in place over there, it was not, वो जो है आम लोगों की रसाई से in terms of affordability वो दूर जा रहा था. बिकॉज एवरीवन वाज लाइक, अगर कोई कमेटी बैठती है, जरगा होता है, फैसला होता है, ऑन द स्पॉट जुर्माना देना या ऑन द स्पॉट कोई भी सुलह सफाई करना या ऑन द स्पॉट कुछ भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना, दैट वाज टू डेंजरस फॉर देम, दैट वाज टू प्रॉब्लमसम फॉर देम, दैट वाज टू टू मतलब कि यानी कि उनको एक फाइनेंशियल लॉस भी इसमें हो रहा था कि इस इन लॉसेस को या इन थ्रेट्स को हम किस तरीके से कवर करेंगे. सो दिस इज व्हाट दीज नंबर्स टेल अस अबाउट. अब कोर्ट रेफरल की जब बात आती है, कोर्ट रेफरल जो है दैट वाज अनदर कंपोनेंट जो इस पूरे एक्ट में या पूरे इस प्रोसेस में इनकलकेट था. अब number of cases referring to the court, if it keeps on decreasing, it shows that
कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम होता जा रहा है। जब कोर्ट के ऊपर से वो बर्डन कम होकर डीआरसी लेवल पे ही एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, तो उसके बाद जो है it also tells that they are becoming more effective and the performance is getting on a positive note. In some of the districts, यानी कि जो अपर दीर, स्वात एंड इवन बुनेर, पास्ट हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी रिपोर्ट थी कि देयर वर इवन 0 cases रिपोर्टेड और 0 cases वर ब्रॉट अप टू डीआरसीज, तो उनमें 100% से भी ज्यादा इंक्रीज आया एंड दैट वाज सिग्निफिकेंट। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि लोगों को पता चलता गया कि देयर इज सम काउंसिल और देयर इज सम कमेटी वर्किंग ओवर देयर टू रिजॉल्व दोस डिस्प्यूट्स। एंड ये रेजोल्यूशन या ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट हुई? ये अवेयरनेस या ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची थ्रू आउटरीच एंड थ्रू द पुलिस सिस्टम which is in place in Khyber Pakhtunkhwa. So ये तो इन ग्राफ्स के पीछे की स्टोरी है। We present it in the form of graph and based on these graphs or based on these bars or histograms, हम करते क्या है, हम फिर अपनी ये पूरा narrative which I was discussing, we keep on discussing this narrative throughout the presentation of our findings for any survey data. Another approach, अब हमने ओवरऑल एक कंपैरिजन तो डिस्कस कर लिया कि वी ऑन अ मैक्रो लेवल वी कंपेयर डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ वन स्टेप after that is what type of cases are being discussed or what type of cases DRCs resolve. It includes familial matters, it includes monetary matters, it includes property matters, and there are other some civil disputes. अब उसमें फिर हम एक नया एक चीज ये देख सकते हैं कि इफेक्टिवनेस के फॉर्म में I'll stick to this dispute resolution council example over here कि इस डेटा से ये शो होता है कि ओवर द पीरियड, यानी कि एक साल के अंदर 2016 और 2017 का जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, द पीरियड इन व्हिच दिस स्टडी वाज कंडक्टेड, कि मॉनेटरी केसेस वर highly coming towards the dispute resolution councils. 35% of the total cases were monetary, 28% were the property, 28% were related to some other civil disputes, and 9% were familial, यानी कि उसमें तलाक वाले cases भी हमारे आ जाते हैं. So this also shows one other narrative कि क्या हो रहा था, what are or you can say that what were the functions or what were the type of cases being taken up by the dispute resolution councils. So this is another form of reporting जो हम अपने सर्वे डेटा या सर्वे एनालिसिस में हम करते हैं. Third, when there is gender involved in any study of, या वो इफेक्टिवनेस की हो या किसी भी किस्म की कभी सर्वे एनालिसिस हो, we do bring in that gender aspect as well. और उससे पता ये चलता है कि अगर एक सोसाइटी जो है कंजर्वेटिव है या सोसाइटी मॉडरेट है या सेमी लिबरल है, how much female penetration is there in the system. That also brings us to the sustainable development goals related to gender equality, कि how much we are moving towards the gender equality. तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी हम फिर देखते हैं. अब यहाँ भी जब ये हम देख when we were doing this study, so in comparison to 2016, जहाँ पे 91 females reported their cases, in 2017 169 females reported their cases to dispute resolution councils across the 9 districts. अब ये एक significant number था. क्यों एक significant? Because in the province where these dispute resolution councils are working और इनकी existence थी उस टाइम पे, और अभी भी है, बट जब हम बात करते हैं तो these councils were there in a conservative environment. अब कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में एक फीमेल का निकलना
डिफरेंट सिनारियो बन जाता है, एंड इन मॉडरेट और सेमी लिबरल में डिफरेंट बन जाता है। अब इस कंजर्वेटिव में इस इतनी परसेंटेज इंक्रीज ऑलमोस्ट 70 to 80% की अगर इंक्रीज आई है तो दैट इज अप्रिशिएटेबल, कि लोगों को पता चल रहा है और खवातीन को भी पता चल रहा है कि जहां पे हम रादर देन कि कोर्ट में किस किस्म की वर्डिंग्स होती हैं, कोर्ट में किस किस्म की एक्यूजेशंस होती हैं, उन एक्यूजेशन के बजाय यानी कि जो इलाके के जो बड़े हैं मशरान जिनको को एक उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है, उन वहाँ के बड़े including the political people, people from the judiciary, the officials of the judiciary, military, civil service, even the lawyer fraternity. तो ये सारे मिल के एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू उनका केस अगर रिजॉल्व कर रहे हैं, एंड इवन बीइंग फीमेल मेंबर्स आर ओवर देयर, सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिपोर्टिंग सर्वे एनालिसिस, कि हम एक ग्राफ के थ्रू हम ये तो बता देते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज हुआ, but or the number has increased or the number has decreased, but what actually is the narrative beyond those numbers, that this should be the key part of the discussion while reporting any of the finding of this survey analysis. This is another form of the of reporting a survey data. अब हमने टाइप ऑफ केसेस भी डिस्कस कर लिए कि किस किस्म के केसेस आ रहे थे। अब उन केसेस की हम फर्दर बाइफर्केशन भी कर सकते हैं कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मॉनिटरी ई केसेस में कितने मेल थे कितने फीमेल थे, हाँ, हमारे पास प्रॉपर्टी में कितने मेल फीमेल थे, हमारे पास अदर फैमिली डिस्प्यूट अदर सिविल डिस्प्यूट्स में कितने मेल फीमेल थे, हमारे पास फेमिलियन में कितने मेल फीमेल थे। सो दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन कि जो हमें बताती है कि where the penetration in terms of gender is. Now, this is another example of survey data, uh, and this is from another study which was done in 2018, and that is called Social Construction of State Legitimacy in Swat District. It was sort of qualitative type of, or you can say that narrative building type, or you can say that कि past जितनी भी literatures हैं या methodology है, it 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 was more like a gap identification, how that gap can be filled. अब इसमें फॉर एग्जांपल कि जो क्वालिटेटिव पार्ट था, क्वालिटेटिव पार्ट में कुछ क्वेश्चंस किए गए, फॉर एग्जांपल कि हाउ टू इफेक्टिवली सपोर्ट पीपल टू बिल्ड मोर रेजिलिएंट लाइवलीहुड एज दे रिकवर फ्रॉम द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, how to build state capabilities to deliver services and social protection and support livelihood. Does support to service equal state legitimacy defined as citizens' acceptance of state authority? अब ये तीन key questions are the key burning research questions which were thrown to the respondents. और इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि वहां के उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी की स्टेक होल्डर थे, द जुडिशरी, द मिलिट्री, सिविल गवर्नमेंट, जितने भी लोग, जितने भी की स्टेक होल्डर्स थे, उनसे the key point was what is or even the people or even the tribes living over there in Swat, उनसे पूछा गया कि what is state according to them, and how for a stakeholder how your entity is supporting that definition or how your entity is working under that definition. तो इस पूरे मतलब कि from starting from the definition of a state to its functioning to the institutional functioning or to the role of the institution in the state, तो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग ली गई, एंड इवन उस पूरे अंडरस्टैंडिंग में लॉस एंड डैमेज को भी देखा गया कि व्हाट एंड और यानी लॉस एंड डैमेज को भी देखा गया, एंड व्हाट वर द गेन्स फ्रॉम इट उनको भी देखा गया. It was sort of a perception, but that perception based on the experiences or based on the
गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स which worked over there, तो उन पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी इस स्टडी में थी. अब फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम a district bar president was interviewed. This was a glimpse of his response कि how वो जो है वो स्टेट को कैसे देखते थे, एंड जो है how courts were working under the state administration or under the administration at that time. इसमें एक और भी चीज की गई थी कि another form of analysis which can be reported in a survey, or the primary research, it's called a discourse analysis. और उस discourse analysis के लिए क्या किया गया, local newspapers को filter out किया गया, and data being taken out from there, और उसमें जो है कुछ पॉइंट्स निकाले गए कि फॉर एग्जांपल कि what was the headline in the newspaper, what were the notes on state function, what were the notes on state values, what were the notes on justification of powers, and what were the metaphors used, or are there any key developments based on the function, or based on the state definition as per the news or as per the print media. तो इस डिस्कोर्स एनालिसिस में डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स को कवर करने की कोशिश की गई, और उन इवेंट्स कवरेज से हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि what how we are going to connect the dots for the further discussion, or how we are going to develop some set of questions that can lead to more exploration of the data, or more exploration of the functions, or more exploration of the role of institutions in the state. So this is another way of reporting such data. अब ये उस पूरे डिस्कोर्स एनालिसिस या जो भी 3 रिसर्च क्वेश्चन थे, उसमें सबसे पहली चीज ये भी देखी गई जब इस चीज को रिपोर्ट किया गया कि what were the methodological issues, or what were the gaps which this whole study worked upon. जब हमें उन सारे इश्यूज और उन सारे गैप्स का पता चल गया, तो उसकी बेस पे the 3 key components which were worked upon, and even इनमें डेवलपमेंट भी की गई, इनको फर्दर मैन्यूवर भी किया गया, कि what actually is state legitimacy as, तो उस the 3 parameters की legality of how power is exerted, justifiability of laws and public acts of consent to state authority. इवन कि लोगों से ये भी इस पूरे सर्वे में पूछा गया, एंड that too was reported in the findings, कि what actually they expect state to be, and what actually currently state कैसी है, and what actually are their perception of the state, and what is actually their demand from the state. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है इन 3 पैरामीटर्स के अंदर भी फिर कवर किया गया. This is one of the approaches जो कि लिटरेचर में यूज हुई, and there are some other approaches as well. अब फाइंडिंग्स को ओवरऑल रिपोर्ट कैसे किया गया, based on the analysis, based on the data, based on the discussions, and based on the context development या the tribal connections being made. तो सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट डेवलप किया गया कि what actually is the argument. फॉर एग्जाम्पल कि इस केस में या ये जो आपके सामने जो नजर आ रहा है, we said कि based on the research, on qualitative research, we found that process of state legitimation were much more constructed by citizens and state agents than we had previously thought. And what actually was perceived was totally different from what actually people have reported.
Contrary to the document idea of state resting on state performance, we found that it was based on a dynamic relationship between people's belief about how state power should be exercised and their actual experiences of the state. Group beliefs about how state power should be exerted were influenced by people's identity and their position in the political settlement. State narrative often directs at particular groups central to the political settlement further inform these beliefs. अब ये एक आर्ग्यूमेंट डेवलप किया गया कि what actually was perceived during the यानी कि जब रिसर्च प्रोसेस चल रहा था what actually was the perception of the state and then on the ground the citizens and state agents how they responded to the state and what actually is their belief of the state and what actually is the political dynamics of that particular region जो कि state की definition को state की functionality को and state के roles को define कर रहे हैं तो ये एक argument develop की गई and based on the analysis and based on the data इस argument को फिर further support किया गया so this is another approach which we use for reporting any survey data moving forward we have regression analysis अब रिग्रेशन एनालिसिस में हम जब लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे तो उसमें हमने सबसे पहले हमने कुछ चीजें डिस्कस की उसमें थी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम द सर्वे वी आल्सो डिस्कस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड यानी कि वेरिएबल्स तो हमने कलेक्ट कर लिए हमने क्वालिटेटिवली भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है now based on the variable construction the qualitative information we design a conceptual framework कि जो and the theoretical connection ये conceptual framework and ये theoretical connection help us in defining our dependent variable and independent variables and that too based on the questionnaire or based on the tool we have in our hand जब ये सारा process हो we start understanding of the variables यानी कि अब variable तो है let's say कि theoretical framework में conceptually उस वेरिएबल की डेफिनेशन जो है उस वेरिएबल को किसी और नाम से डिफाइन किया गया है या उसकी फंक्शनैलिटी हाउ वी टेक आवर टूल एंड दैट थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम उसको सिंक किस तरीके से करते हैं एंड वी मेक इट पार्ट ऑफ आवर ओन एनालिसिस जब हमें ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो उसके बाद जो है we decide upon our methodology and we do the analysis. Now, this is one of the table from a study on the firm internationalization. ये वाला जो table है, it is actually the quantitative information based on the survey. अब ये table required किस लिए है? This table is actually required कि ये हमारे जो आगे डिस्कशन या मेथोडोलॉजी को या जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा एंड इट विल सपोर्ट द डिस्कशन कि व्हाट एक्चुअली the coefficient of any analysis is saying or what actually the coefficient of the analysis is saying and what actually is happening on the ground so this helps us in connecting those dots and this can be said that it is a sort of descriptive analysis. The descriptive analysis leads to the to most argumentative type of discussion in post regression या ये कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए भी यूज होते हैं and this is the main model based on our decision यानी or based on the literature or based on the framework हमने इस पूरे रिजल्ट को इस तरीके से रिपोर्ट कर दिया एंड बेस्ड एंड फ्रॉम हियर वी मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन कि हमारा लेट्स से साइज ऑफ द फर्म का क्या कोएफिशिएंट है एंड व्हाट एक्चुअली इट इज सेइंग अबाउट द एक्सपोर्ट मॉडल एडवांटेज ऑफ फर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स एज क्या है एवरेज एज ऑफ फर्म टू फर्म रिलेशनशिप क्या है कल्चरल एफिनिटी इस तरीके से हमने फिर इवन आखिर में जो हमारे पास रो सिग्मा लिम्डा इन सब चीजों की इंटरप्रिटेशन हम करते हैं एंड वी बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस और बेस्ड ऑन दिस क्वांटिटेटिव
approach, we go towards the conclusion and our own recommendations. So this is how we report data, the survey analysis in, यानी कि किसी भी डोनर रिपोर्ट या किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें हम किस तरीके से इसको रिपोर्ट करते हैं, एंड किसी भी जर्नल पब्लिकेशन में हम लेट्स से रिग्रेशन कर रहे हैं तो रिग्रेशन के लिए कैसे कर रहे हैं, एंड इवन द सर्वे एनालिसिस पार्ट आल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमने किसी सर्वे कंपोनेंट को या सर्वे वाले फैक्टर्स को हमने अगर रिपोर्ट करना है, हाउ वी रिपोर्ट दोस थिंग्स इवन इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पेपर. So this is end of this course on data analysis for practitioners. इस कोर्स में हमने जो चीजें डिस्कस की, we try to remain focused on the primary research कि हम primary research करते कैसे हैं, because most of the times ये देखा जाता है कि लोग फील्ड में उतर जाते हैं, सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, बट उनको वो डेटा एंट्री मैकेनिज्म का नहीं पता होता, उनको डेटा क्लीनिंग मैकेनिज्म का नहीं पता होता, एंड हाउ they report or how they construct the variables or and how they do the analysis, उन चीजों का पता नहीं होता, but still they are able to do it, and they pass on और वो and that research get into some shelf. The core objective of this course was कि हमने करना कैसे है, करना क्या है, क्यों करना है, और उसको रिपोर्ट किस तरीके से करना है, so that it becomes effective. And further, जब वो effective है तो फिर how we present those findings to stakeholders या ये किसी भी जगह पे हम उनको publishable कैसे करते हैं ताकि वो आम एक रीडर तक पहुंच सके, and that reader can have understanding what actually is happening around that particular topic, and even for policymakers what actually is happening in their area and what actually needs to be improved. So this was the core objective and core expectation कि ये course ये चीजें deliver कर पाए. I look forward to your comments and suggestion on this course, and hopefully in coming days हम इसको further improve कर सकते हैं, and based on the comments there can be another round, but we will have other courses on the data analysis side, and we will also have the core analytical discussions कि हम tools के अंदर किस तरीके से analysis करते हैं. So stay tuned for that. And thank you very much for listening to this course and for this lecture. Allah Hafiz. Thank you very much for all your attention which you have in uh, putting on for all of these 9 lectures. Thank you.